Hello बच्चों, let's read this question. Assertion A. The packing efficiency is maximum for the FCC structure. Reason are the coordination number is 12 in FCC structures and following options are given to us. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे and the key concept of this question is FCC structure. Now let us see FCC structure क्या होता है, which represents face centered cubic unit cell and cubic crystal system में जो crystal system है उसमें हम जो unit cell है that is in the shape of cube and let us say हमारे पास ये cube के form में unit cell present है and according to the face centered cubic lattice जो atoms present होते हैं इसमें that are present at the corners and along with the corners जो हमारे पास atoms present होते हैं that are present at the face जो हमारे पास क्यूब के 6 फेस होते हैं there in this way जो atoms present है that are present at the corner and the faces of the unit cell. So let us write an FCC unit cell contains atoms at all the corners of the crystal lattice crystal lattice and at the center of all the faces of the cube all the faces of the cube. So this is the FCC and its structure. So let us see कि assertion क्या कहता है. Assertion says जो packing efficiency है that is maximum for FCC structure. So let us see first packing efficiency क्या होती है. Packing efficiency and packing efficiency means fraction of unit cell occupied by the lattice point. जो यूनिट सेल है वो कंबाइन होके लेटिस का फॉर्मेशन करती है एंड यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन है जो एक लेटिस पॉइंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है दैट कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी. फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल occupied by lattice point एंड जो फॉर्मूला है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का रिप्रेजेंटेड बाय P is equals to Z multiplied volume occupied by lattice point volume occupied by lattice point divided by volume of unit cell multiplied by 100. तो ये फॉर्मूला रहता है वेयर जो Z है that represents the number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. एंड जब हम क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल्स पढ़ते हैं एंड टाइप्स कम्स आउट टू बी SCC,
simple centered cubic unit cell, BCC, body centered cubic unit cell, and FCC, face centered cubic unit cell. एंड अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है फॉर थ्री ऑफ देम, देन जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आता है एससीसी के लिए दैट इज 1, एंड फॉर बॉडी सेंटर इट इज 2, एंड एफसीसी के लिए जेड इज 4. अलोंग विद दिस जो हमारे पास क्यूब में जो लेंथ होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है दैट रिमेन्स इक्वल. लेट अस से दिस इज क्यूब, तो जो हमारी इसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होगी दैट विल बी इक्वल, एंड फॉर दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड इट इज कॉल्ड एज लेंथ. एंड उस एज लेंथ का अगर मेजर देखें फॉर एससीसी इट इज 2r, विच मीन्स जो हम एटम्स शो करते हैं जो r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ दैट. एंड बीसीसी का जो रिलेशनशिप आता है विद एज लेंथ एंड रेडियस दैट इज 4r divided by under root 3, and FCC it is 4r divided by under root 2. Now we will use the formula जो packing efficiency है that will be Z1 multiplied by volume occupied by lattice point, जिसे हम sphere से represent करते हैं, and the formula will be 4/3 pi r cube multiplied by 100, and this is whole divided by the वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यूब से, एंड क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट विच मीन्स ए क्यूब. एंड जो हमारे पास ए का वैल्यू है, एज लेंथ का जो वैल्यू है फॉर एससीसी दैट इज द 2r. सो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 100 को, 400 divided by 3 and pi, and here we have r cube, and that will be 2r cube. So हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आएगा here 2r cube will be 8 r cube से r cube cancel, and on the table of 4 it will be 100 and this will be 2. Further it comes out to be 50. So 50 pi divided by 3, 50 pi means 3.14 divided by 3. So जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आती है फॉर एससीसी इट कम्स आउट टू बी 52%. 52%. नाउ लेट अस सी फॉर बीसीसी इन द सेम वे. जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होगी P will be equal to Z2 multiplied by the 4/3 pi r cube divided by the volume of unit cell A cube, and A का value is 4r divided by under root 3, 4r divided by under root 3 cube. So by solving this it will be 2 यहाँ पर we have 100 also multiplied by 100. So it comes out to be 2 multiplied 400 divided by 3 and pi, and जो हमारे पास 4r divided by under root 3 है that will go in the numerator, and this will be under root 3 by 4. So जो हमारे पास न्यूमिनेटर में r था that is r cube, and below b, so we can write this like in this way. So this r will got cancelled, and by this multiplication 2 multiplied 400 multiplied 3.14 for pi, and under root 3 का cube which is divided by the 3 multiplied 4 cube
comes out to be 68%. सो BCC के लिए जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आती है दैट कम्स आउट टू बी 68%. इन द सेम वे हम FCC के लिए निकालेंगे. फॉर FCC the packing efficiency will be Z. Z is 4 multiplied by the volume, 4 by 3 pi r cube multiplied by 100, and जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है that is A cube, and A का value we have already seen 4r divided by under root 2. Now it will be 4 multiplied 4, and this will be multiplied by 100. So ये आ गया 1600. मल्टीप्लिकेशन में पाई है हमारे पास, एंड जो 4 बाय अंडर रूट 2 है that will go in the numerator as under root 2 by 4, and जो हमारे पास 4 by 3 pi r cube का 3 था that will be here, एंड हमारे पास r cube प्रेजेंट है, and here we also have r cube. So 1600 divided by 3 multiplied by 3.14 multiplied by under root 2 by 4 cube. So r cube divided by r cube, ये कैंसिल हो गया. तो now 1600 divided by 3 multiplied to 3.14, and अंडर रूट 2 का क्यूब आएगा हमारे पास 2.83 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब, 4 multiplied 4 16, and 16 multiplied 4 64. अब जब हम 1600 को 3.14 एंड 2.83 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 3 multiplied 64 से, then it comes out to be 74%. So by this we can see जो हमारे पास HCC, BCC एंड FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी आई है और पैकिंग फ्रिक्शन आया है that comes out to be 52%, 68% and 74%. So we can see जो FCC है that has the maximum between all of these. So जो हमारा assertion है that is correct. Now let us see reason क्या कहता है. Reason says the coordination number is 12 in FCC structure. For this let us see coordination number क्या होते हैं. Coordination number, जो coordination number है that represents कि nearest neighbor atoms surrounding में एक particular atom और ion के कितने present है. Number of nearest neighbor atom or ions surrounding an atom और ion, एंड जो हमारे पास FCC प्रेजेंट होता है, लेट अस से ये हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है ऑफ द यूनिट सेल, एंड एक और यूनिट सेल प्रेजेंट है बिलो दिस इन दिस वे. सो जो हमारे पास फेस सेंटर है, लेट अस से दिस इज द फेस सेंटर, एंड ये एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर पर. सो जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे हमारे पास एटम्स, ये हमने स्मॉल शो किए हैं बट एक्चुअल में दे आर लाइक दिस. तो वो ये टच करते हैं दूसरे एटम्स को. सो दीज आर इन टच विद दिस, एंड अलोंग विद दिस जो हमारे पास 4 फेस पर सेंटर में जो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे वो भी टच करेंगे फेस सेंटर को के एटम को, एंड इन दिस वे जो नीचे वाला लेटिस होगा उसके जो 4 फेस पर एटम्स प्रेजेंट होंगे दैट विल आल्सो टच, विच मीन्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 is the coordination number, and by this we can say जो हमारे पास reason given है that is also correct, but assertion का correct explanation नहीं है. So हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, which says both assertion and reason are true. Reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Is not correct explanation of assertion. Hope the solution was understandable. Best of luck.